Hello students, good afternoon all of you. Let us continue our workbook, that is the workbook mathematics workbook part 2 of our grade 4th, and we are going to solve our workbook, that is the first chapter number 8, fractions, and today we are going to solve the 7th onwards pages. Okay, so let's solve the concept 8.2, that is identify and compare like fractions. Okay, let us solve the recall section. We have multiple choice questions. Observe the given figure and answer the question that follow. Okay, so the fraction represented by that color. Okay, so it's a gray color is, चेक करते हैं, देखो 1 2 3 टाइम्स दैट कलर्स है और कुल मिलाकर कितने सेक्शन है ये हमें चेक करना है. सो दैट इज द 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. So there are 12 sections are there. So in that 3 sections of that color, that is the gray colors, so here our option A is the correct option, that is the 3 upon or 3/12 you may say, or 3 divided by 12. So our correct option is the option A. Let us turn the page and page number 8 here. The fraction represented by blue color. So चलो blue color देखते हैं, काउंट करते हैं. 1 2 3 4 5, that is a 5 upon 12. So 5/12 there is the, so here correct option is the option D, and we can write down here 5 upon 12. So and the option D is the correct option. Then the fraction represented by white color. Okay, white color है, so white color का चेक करते हैं चलो. So 1 2 3 4 upon 12 is the for the white color. Check it out, where is the 4 upon 12? Yes, in the D option. So 4 upon 12, and here we have to write down the option D. Let us solve now remembering and understanding section. First we have the multiple choice questions. The fraction of the parts not shaded in the figure. Not shaded, यहाँ पर shaded किए तो 1 2 3 parts are there. From that 3 part 2 parts not shaded, so 2 upon 3 is our correct option. So 2 upon 3, that is option C is the correct option. Now an unlike fraction of 1 upon 7 is, तो 1 upon 7 का unlike fraction कौन सा है? सो अगर चेक करते 2 upon 7 तो like fraction है, 3 upon 14 ये unlike है, 1 upon 7 ये भी like है, 5 upon 7 ये भी like है. So our correct option is option B, that is the 3 upon 14. So we have to write down here the option B. Now 6 example, which of the following is a like fraction of 3 upon 7? 3 upon 7 को देखो, जिसका डिनोमिनेटर सेम होता है तो क्या होता है, लाइक फ्रैक्शन होता है. सो यस, ए में 2 upon 7 एंड 3 upon 7 का डिनोमिनेटर यहाँ पर क्या है, सेम है. सो दैट इज अवर करेक्ट ऑप्शन एंड करेक्ट लाइक फ्रैक्शन ऑफ 3 upon 7 इज. Now let us solve the example 7. Fill in the blanks. The fraction of the unshaded parts in the figure is, unshaded part 1 2, ये unshaded part है और कुल मिलाकर कितने पार्ट है, 1 2 3 4 5 6 7 8. So our correct answer is the 2 upon 8. Okay, now fraction that have same denominator, or you may say that equal, same, but we can write here the same denominators are called like fraction. The fraction 3 upon 9, 3 upon 4 and 3 upon 7, they don't have the same denominator, they are unlike fraction. Which fraction? Unlike fractions. Okay students, now let us solve the very short answer question. Identify the like fractions. So here we have 2 upon 12, 3 upon 12, 2 upon 8, 9 upon 12 and 2 upon 7, but here 2 upon 12, 3 upon 12 and 9 upon 12 having the same denominator. So you can say that like fractions are, चलो लिखते हैं फिर, 2 upon 12, then 3 upon 12 and 9 upon 12, they are the like fractions. Okay students, now come to the page number 9
एन एग्जाम्पल 11, आइडेंटिफाई द अनलाइक फ्रैक्शंस। तो इसमें से हमें अनलाइक फ्रैक्शन ढूंढने हैं। देखो यहाँ पर 2/6 और 2/8 इनका ही डिनोमिनेटर क्या है, सेम नहीं, बाकी सबका डिनोमिनेटर 7/7 है। सो अनलाइक फ्रैक्शन हो गया हमारे 2/6 एंड 2/8। सो अनलाइक फ्रैक्शंस आर 2/6 एंड 2/8। ओके, और उसके साथ आप कोई भी इसमें से एक फ्रैक्शन लिख सकते हो, वो भी इनके साथ क्या होगा, अनलाइक ही होगा। तो ऐसे भी आप कर सकते हो। नाउ लेट अस सॉल्व द 12th वन एग्जाम्पल। फाइंड द फ्रैक्शन रिप्रेजेंटिंग द अनशेडेड पार्ट। इसमें से अनशेडेड पार्ट का हमें फ्रैक्शन लिखना है। देखते कितने पार्ट्स है, 1 2 3 4 5 6, टोटल 6 पार्ट्स आते हैं। सो इसमें से 1 2 3 4, 4/6 जो पार्ट है वो कैसे, हमारे अनशेडेड पार्ट से। सो यू कैन राइट हियर डाउन द 4/6। नाउ लेट अस सॉल्व द शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस। एग्जाम्पल 13, आइडेंटिफाई द लाइक एंड अनलाइक फ्रैक्शंस। तो चलो A1 में हमें लाइक फ्रैक्शन लिखने हैं और अनलाइक फ्रैक्शन लिखने हैं। चलो लाइक फ्रैक्शंस लिखते हैं। इट्स सो ईजी। लाइक फ्रैक्शंस क्या होते हैं, जिसके डिनोमिनेटर जिसका सेम होता है। सो यहाँ पर देखो 1/7, 3/7, फिर 2/7, 6/7, 5/7, इन सब के डिनोमिनेटर कैसे हैं, सेम है। सो दे आर द लाइक फ्रैक्शन। 1/7, 3/7, then 2/7, then 5/7 एंड द 6/7। तो ये सारे कैसे फ्रैक्शन है आपके, लाइक फ्रैक्शन से। और अनलाइक फ्रैक्शंस कौन कौन से होंगे, यस, अनलाइक फ्रैक्शंस वो होंगे हमारे फिर 2/6, देन 3/4 and then 1/2. So they are the unlike fraction in our example A. Now let us solve the B1 example. In the B1 example देखते हैं लाइक फ्रैक्शन कौन कौन से है। तो देखो यहाँ पर जिसका डिनोमिनेटर क्या है, बिल्कुल सेम है। तो ऐसे कि उनसे 13 13 13 13 13, तो 13 डिनोमिनेटर वाले जितने भी है वो क्या होंगे, हमारे लाइक फ्रैक्शंस होंगे। So like fractions are that are 2/13, 7/13, 3/13, then 4/13, then 9/13। ओके, और जो बाकी के हैं वो होंगे हमारे अनलाइक फ्रैक्शंस। तो उनकी भी नाम लिखते हैं। दैट इज़ द 13/15, देन 14/17 एंड देन 11/19। ओके, and they are the unlike fractions. Now identify the like and the unlike fractions. So that example is the similar like above example. So you can easily solve that example also for your homework. So I'm going to give that example for your homework. Okay students, so that is for your homework part. You have to solve that examples and write down the answer over here. Now let us turn the page and open the page number 10. So from the page number 10 we have the long answer questions are there. Find the fraction of the parts not shaded in this figure. Which of them represent like fractions? चलो पार्ट हमें ढूंढना है पहले तो. सो A1 है हमारा तो पार्ट शेडेड पार्ट उसमें से होंगे. तो यहाँ पर हमें फ्रैक्शन ढूंढने नॉट शेडेड पार्ट के. सो वी कैन से दैट अनशेडेड पार्ट्स कितने हैं यहाँ पर 1 है. एंड टोटल पार्ट्स है यहाँ पर टोटल पार्ट्स
कितने यहाँ पर, यस 4 पार्ट्स आर देयर. सो फ्रैक्शन, इसका फ्रैक्शन क्या होगा फर्स्ट का, सो यस 1/4. ओके, देन B1 में चेक करते हैं. सो अनशेडेड पार्ट कितने हैं, अनशेडेड पार्ट 1 2 3 parts are there, and the total parts, okay, total parts भी हम चेक करने 1 2 3 4 5 6 7 8, total parts are 8. so fraction इसका होगा यहाँ पर, that is the 3/8. again in C1 example, unshaded part that is equal to 1, and the total parts that is equal to 4. कितने टोटल पार्ट्स यहाँ पर 4 हैं. सो फ्रैक्शन इसका होगा हमारा फॉर द अनशेडेड पार्ट, दैट इज 1/4. अगेन in D1 example, we can say that 2 parts are unshaded, that is the unshaded part is equal to 2, and the total parts is equal to 1 2 3 4 5 6, total parts are 6. 1 2 3 4 5 6 total parts are there. so fraction होगा इसका, fraction is equal to 2/6. ओके, तो इसमें से लाइक फ्रैक्शन कौन रिप्रेजेंट करता है, सो यस इसमें से A एंड C रिप्रेजेंट अवर लाइक फ्रैक्शंस. ओके, सो यू कैन से दैट example A and C represent like fraction. ओके स्टूडेंट्स, एग्जाम्पल ए और सी ने यहाँ पर क्या रिप्रेजेंट किए, लाइक फ्रैक्शन. ओके, सिमिलरली यू डू हैव द सेम एग्जाम्पल, दैट इज एग्जाम्पल नंबर 16. so that example for your homework part. okay students, and now let us move ahead to the page number 11 and let us solve the example number 17. Amit ran 3/4 and Sunil ran 2/4 of the same distance. Who covered more distance? तो इसमें से मोर डिस्टेंस किसने कवर किया, सो हियर वी हमें क्या करना बेटी, यहाँ पर हमें करना है यहाँ पर कंपेयर. ठीक है, विच वन इज़ द बिग फ्रैक्शन एंड विच वन इज़ द स्मॉलर फ्रैक्शन. अगेन इन सेकंड एग्जाम्पल, सो लेट अस सॉल्व फर्स्ट द फर्स्ट एग्जाम्पल, दैट अमित एग्जाम्पल. अमित रैन, सो अमित रैन 3/4 and Sunil ran 2/4. ओके, एंड द सेम डिस्टेंस उन्होंने कवर किया है. तो किसने ज़्यादा डिस्टेंस कवर किया है, ओके, हु कवर द मोर डिस्टेंस. सो हियर इफ वी कंपेयर बोथ, दैट इज द 3 is the bigger number than 2, that means 3/4 is greater than 2/4. okay, and clearly we can say here that Amit ran more distance or Amit covered more distance. You can write down that Amit covers more distance. okay, and in example B, Faizan used 4/9 of powder sugar for a cake while Seema used 5/9 for another cake. Who used less powder sugar? Okay, so here clearly you can say that 5 is greater than 4.
So we can say that means 5 upon 9 is greater than 4 upon 9. So that means Seema use more powder and powder sugar, but Faizan use less. So we can say that Faizan use 4 upon 9, that is less powder sugar. Okay, now we have same types of question is the question number 18, that is the Samis and Abir question. So you can easily solve that question. Just you have to compare the fractions, which one is the bigger fraction, which one is the smaller fraction, and then you can easily solve that. We can easily find out the solution for that. So that example is for your homework part. Okay students, now let us move ahead to the page number 12. So here we have the long answer questions. A rectangle is divided into equal parts. Some parts are shaded using different shades. Write the fraction of each type of shade in the rectangle. Compare the fraction. Write which shade is used the most and which shade is used the least. तो यहाँ पर हमें कंपेयर करना है और कौन सी शेड ज़्यादा इस्तेमाल की है वो हमें चेकआउट करना है. चलो फर्स्ट अपॉन टोटल नंबर ऑफ इक्वल पार्ट्स वी हैव टू राइट डाउन. टोटल नंबर ऑफ equal parts, that is equal to, let us count, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16. So they are the 16. Now total blue parts, let us count, 1 2 3 4 5 6 7 8. That is the 8 upon, okay, 8 are there. So fraction for blue part का कितना आएगा, 8 upon 16 आएगा. ठीक है. नाउ फॉर टोटल ग्रे पार्ट्स, one two three four 5, they are the 5. So fractions for gray parts that is equal to आएंगे हमारे 5 upon 16. So clearly we can, and also for the white part, okay, white part also remaining. So for white part, total white parts are is equal to 3, and its fraction for white part, that is equal to 3 upon 16. So clearly you can see that 8 upon 16 is the larger, 5 upon 16 is the smaller, and 3 upon 16 is still smaller. So you can say that like that, 8 upon 16 is greater than 5 upon 16 and greater than 3 upon 16. So we can say that which shade is used the most and which shade is used the least. So you can say we can say that most use is the blue part. So most use, that is the blue, and least use, that is the white.
और अगर कम मानी जाए तो ग्रे को भी हम कह सकते हैं, वाइट एंड ग्रे. Okay students, similarly we have the 20 example like that. यहाँ पर भी वही क्वेश्चन है आपको, which color is used the most and which color is used the least. So students, you can easily solve that examples at your home. So that is for your homework part. Okay students, so today we learn here till the page number 12. Next part, okay, we have the higher order thinking skill part also from the page number 13. Here we have the short answer questions. Color each figure to represent the given fraction and compare them. चलो अभी क्या करना है, हमें कलर करना है यहाँ पर. सो 3/8, तो इसके से 1 2 3 पार्ट आपको क्या करने हैं, कलर करने हैं और दोनों को कंपेयर करना है. देखो आप इजीली से कर सकते हो कि यहाँ पर देखो डिनोमिनेटर सेम है तो इसके पार्ट ज़्यादा होंगे कलर्स, इसके 1 2 3 4 5 पार्ट्स कलर करने हैं और इसके 3 पार्ट्स कलर करने हैं. तो ईजिली यू कैन से दैट फ्रैक्शन इज़ द बिगर फ्रैक्शन. ओके स्टूडेंट्स, एंड दैट एग्जाम्पल इज़ फॉर ऑल्सो फॉर योर होमवर्क because it is easily and coloring example, so you can do it easily. Now let us solve the long answer question. Arrange the following fraction in ascending and descending orders. चलो मैं करता हूँ फर्स्ट फ्रैक्शन के लिए असेंडिंग ऑर्डर्स का. तो बी का आपको करना है यहाँ पर घर पर, ये आएगा बी सेक्शन, आप यहाँ पर सॉल्व करो. ए सेक्शन में यहाँ पर करता हूँ. फर्स्ट लिखूँगा मैं असेंडिंग ऑर्डर. असेंडिंग ऑर्डर में क्या होता है कि जो नंबर स्मॉलेस्ट है, स्मॉलेस्ट टू लार्जर, सो यहाँ पर सबसे स्मॉलेस्ट चेक करूँगा मैं. डिनोमिनेटर सेम है तो मुझे सिर्फ ऊपर के नंबर करने हैं चेक. सो देखो 1/8 इज़ द स्मॉलेस्ट, देन बिगर इज़ द 2/8, देन बिगर इज़ द 3/8, then bigger is the 4/8, then bigger is the 5/8, then bigger is the 6/8, and then bigger is the 7/8. So like that I show here the ascending order. Now the descending order you have to write down just opposite to the ascending order, that is the descending order. So descending order is like that: 7/8 first, then 6/8, then 7/8 के बाद 6/8, then 5/8, then 4/8, then 3/8, then 2/8, and then 1/8. Okay students, that are the 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7. That means we taken all the numbers. Okay students, now similarly there is another example and it is like the same like that. So that is for your homework part. So now here we completed our concept 8.2. okay, so we will learn concept 8.3 in our next video. Bye bye for now, take care.